चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। उसमें जो हमने आज प्रैक्टिकल जो है उसको डिस्कस करना है, वो हमारे पास है टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी हमने आइसोलेट करते हैं उसको हम किस तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उनको आइसोलेट किस तरह से कर सकते हैं, और हम अपना जो सैंपल है उस ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो भी हमने कंपोनेंट ऑब्टेन किया है उसमें आपके पास कितने यानी आपका जो सैंपल है वो प्योर है या नहीं है। एक तो ये हमें पता चलेगा टीएलसी से। दूसरा कि आपने सपोज जैसे क्लव ऑयल जो है वो निकाला है तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं या बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो ये हमें कौन कौन से तो बाद में हमें पता चलेगा, पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि हैं कितने। तो उसके लिए हम जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उसके लिए हम टीएलसी को यूज़ करते हैं। अब टीएलसी की किसका है एब्रीविएशन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और पहले आप इसकी ज़रा वीडियो देखिए, तो उसके बाद जो है ना इसकी हमने जनरल डिस्कशन की हुई है, लेकिन इसको हम जो है पहले आप इसका प्रोसेस नोट करें, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब आप देखते जाइए। C is a method used for rapid qualitative analysis, where components in a mixture can be separated and identified. This video is focused on the general method or procedures used in TLC. And for information on the theory, you can check out your lab manual or lab guide. Separation occurs on a thin layer of silica on top of a solid support, such as a sheet of glass or a sheet of plastic as seen here. This is called the Tlc plate. The properties of the silica and the properties of a solvent are used to draw the components up the plate. Differences in the properties of the components in the mixture mean that each component will travel up the plate at a different rate. This causes a separation. Separated components can be identified by comparing how far they travel along the plate relative to reference material, also known as standards. Let's take a closer look. First of all, we need to prepare the TLC plate. Make sure that you handle it only by its edges or use tweezers since we don't want to contaminate the silica gel surface. A ruler is used to draw a line using a pencil about 1 centimeter from the bottom edge of the plate. And draw only a very light line. Try not to score the surface of the silica. This line is called the origin. Vertical markers are spaced. अच्छा, इसमें ना एक चीज़ नोट करें, अभी इसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो टीएलसी का कार्ड है उस पर जब आपने लाइन लगानी है ना नीचे स्केल रख के, तो लाइन आपने बहुत हल्का सा पेंसिल को मतलब ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्की सी सुपरफिशियल सी लाइन लगानी है। और यही आप जो है प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी फॉलो करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि अगर आप ज़ोर से दबा दबा के लाइन लगाएंगे तो उसके जो पोर्स है ना कैपिलरी के, वो ब्लॉक हो जाएंगे। इसके अंदर कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो आपका सॉल्वेंट जो है वो राइज करना है। तो उसके जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर सॉल्वेंट ऊपर फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि आपने सुपरफिशियल सी जो है वो लाइन वो लगानी है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रिज्यूम कर देती हूँ। These markers are used as points of reference when applying mixtures and standards, dissolve, and suitable solvent. And here we are going to run 4 lanes, lane A, B, C, and D. In this demonstration, we're going to see how to separate and identify using TLC. In this bottle, the identity of the contents is unknown, but we do know that it contains either compound X or compound Y, or even a mixture of both. In this bottle, we have an authentic sample of compound X, a sample which we know beyond any doubt is compound X, so we call it standard X. This is our first reference. In this bottle, we have an authentic sample of compound Y, sample which we know beyond any doubt is compound Y, so we call it standard Y, and this is our second reference. The first part of the TLC analysis is to spot the plate.
We use a capillary applicator to apply a spot of standard X at the origin in lane A and again in lane C. Now in lane B at the origin, we apply a spot of standard Y, and once more at the origin in lane C. Note how we use a clean capillary applicator with each solution. This is to avoid cross-contamination between the lanes. And so with a clean capillary applicator, we apply a spot of the unknown in lane D. So looking at the spotted plate, we have standard X in lane A, standard Y in lane B. In lane C, we have a mixture of standards X and Y. And in lane D, we have our unknown, which is either X or Y, or a mixture of both. Let's find out the composition of the unknown. A pre-measured volume of a suitable solvent is added to the developing chamber. You'll normally be told which solvent to use. The developing chamber is covered with a lid for a few minutes, and this few-minute waiting period allows the atmosphere inside the tank to become saturated with the solvent vapors. The spotted plate is quickly placed inside the developing tank so that the bottom end is immersed in the solvent pool. We must always make sure that when we first put the spotted plate into the solvent pool, the origin is above the surface of the solvent. Generally, the solvent will take just a few minutes to ascend the plate, and we can usually see the front edge of the now wet silica slowly ascend the plate. This boundary between dry and wet silica is called the solvent front. When the solvent front is close to the top of the plate, say about a centimeter from the top, the plate is removed from the developing tank. And the solvent front is quickly marked with a pencil. There are a number of ways to see, or as we say, visualize developed TLC plates. A common method is to place the developed plate underneath an ultraviolet or UV light source. This method of visualization is by far the most common in your lab. If a fluorescent indicator is added to the silica will fluoresce under UV light. Chemicals on that plate, however, will usually show up as dark spots. Sometimes, when the chemical on the plate is UV active, the spot will fluoresce a different color than the silica and be visible in that way. But most compounds will just show up as dark spots against a fluorescent silica background. So while visualizing the plate under UV, we are now able to outline all the spots with a pencil so that we can locate the spots under visible light. And once all the spots are outlined, we can remove the plate from the UV light box. And now that the plate is no longer under UV light, we can see all the spots together with the solvent front. Let's take a closer look at the results. By comparing the results in lanes A and B, we can see that compound Y has traveled further than compound X. Now comparing lane C with lanes A and B, we can conclude that the lower spot is X and the higher spot is Y. This is called indexing the references. Finally, we can now compare the unknown in lane D with the standards or references in lane C. This allows us to identify the unknown. Although it's pretty clear from this result that the unknown was actually compound X, we can also characterize spots on developed TLC plates by their RF value. The RF value for any spot is equal to the distance moved by that spot in millimeters divided by the distance moved by the solvent, also in millimeters. Now, using this developed plate as an example, and assuming that RF values for the spots 1 and 2 in lane C have already been determined, let's now obtain the RF for the single spot in lane D.
The distance moved by the spot from the origin to its center is 28.0 millimeters, and the distance moved by the solvent from the origin through the spot to the solvent front is 80.0 millimeters. The RF for the spot is thus calculated to be 0.35. Note that it's customary to report RF values to 2 decimal places. In this example, the RF of 0.35 for the single spot in lane D compares favorably to the RF of standard X in lane C. So we can confirm that the unknown was in fact compound X. Here we see the measurements being made and recorded in the notebook. RF values calculated and also recorded. The closer the RF value of an unknown is to the RF value of a standard, the greater the chance that the unknown is the same as the standard. This is what allows us to identify unknowns in mixtures by comparing RF values of the unknowns with those of standards. It's unlikely that RF values of analytes will exactly match those of the standards to the second decimal place. This is due to a combination of experimental error arising from various factors, including measurement uncertainties and inconsistencies in the TLC plate. Nevertheless, in most cases, it's possible to confirm the presence or absence of a compound by comparing its RF value to that of a reference or standard run alongside it on the same TLC plate. Here we can see that the RF of the spot in lane D is much closer to the RF of compound X than the RF of compound Y. And since we knew that the unknown was one or the other, we can confirm the unknown's identity as being compound X. This completes this video on the TLC method. You can check out more of our instructional videos on our YouTube channel at Catalan Chem. चलो अभी आप लोगों ने गर्ल्स देखा है टीएलसी का। इसमें अब हम अपने सैंपल को किस तरह से कर सकते हैं। अब आप फर्ज करें आपके पास ये इन्होंने 4 लिए हुए हैं। हमने जैसे हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि हम यूजीनोल को हमने सेपरेट करना है। तो अगर हमारा जो क्लव ऑयल है हम उसको लगा देते हैं। फर्ज करें ये जो सी वाला है यहाँ पे हम अपना क्लव ऑयल जो है उसका स्पॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि उसमें यूजीनेल है कितना है और इसके अलावा कितने कंपोनेंट्स है। यहाँ पर हमारा इम्प्योर सैंपल आ जाएगा लाइक क्लव ऑयल। ठीक है, एक स्पॉट हम लगा देते हैं प्योर यूजीनोल का। ठीक है, तो हम 4 के बजाय हम 2 के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब प्योर यूजीनोल फर्ज करें यहाँ तक कर रहा है और जो हमारा क्लव ऑयल है उसके अंदर जो यूजीनोल है वो यहाँ वो भी उसके एग्जैक्टली जो है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि प्योर कंपाउंड। अब जो आपने प्योर कंपोनेंट रखा है ना, यानी आपने एक स्पॉट लगाया है यूजीनोल का और एक स्पॉट आपने लगाया है जो आपने टोटल एक्सट्रैक्शन की थी एनहेक्सेन के साथ क्लव ऑयल की। ठीक है, तो जो क्लव ऑयल है उसके अंदर यूजीनोल के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके आपको यहाँ पर मल्टीपल स्पॉट्स मिलेंगे। अब उसमें से कौन सा वाला स्पॉट जो है वो यूजीनोल का है वो हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास उसके पैरेलल जो आ जाता है जो हमारे प्योर सैंपल का, यानी हम जिसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं हमने उसका जो है वो लेबोरेटरी स्टैंडर्ड का, लैब स्टैंडर्ड या रिसर्च ग्रेड का वो अलग से भी कंपोनेंट लेके रखा है, वो हम इधर लगा लेंगे। तो जहाँ तक उसके स्पॉट ने ट्रेवल किया है उतना हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके बराबर में जो है वो इधर इन इम्प्योर में से कौन सा वाला स्पॉट आ रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारा यूजीनोल का होगा। अच्छा, इसमें जो आपके पास आ जाता है कि ये तो आपको पता चल गया। इसी तरह आपने लेमोनिन, जो लेमन से हमने लेमन ऑयल निकाला है उसमें से भी लेमोनिन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम इसी तरह कि यहाँ पर हम प्योर लेमोनिन का जो है स्पॉट लगाएंगे और यहाँ पर जो हमने लेमन से एक्सट्रैक्शन की है उसका लगाएंगे।
उसमें लिमोनिन के अलावा भी कंपोनेंट्स होंगे। तो आपके पास इस तरह से उसके आपके पास मल्टीपल स्पॉट्स आएंगे और उन स्पॉट्स में से जो प्योर लिमोनिन है वो कौन सा वाला है वो आप उसके पैरेलल जो आपका प्योर रेफरेंस है उसके साथ जो है वो टैली करके तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इन दोनों जो उसका है ना उसको दोनों जो आपके प्रैक्टिकल आपने किए हैं उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेचुरल प्रोडक्ट जैसे आप अपने रिसर्च में कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसकी भी टीएलसी करके देख सकते हैं कि आपके एक्सट्रैक्ट में उसमें तो खैर बेतहाशा चीज़ें मौजूद होंगी कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आपने आज जो आपकी असाइनमेंट है ना वो ये है कि पहले तो आपने इस सारे को एक दफ़ा से अच्छी तरह से पढ़ना है। एनालिटिकल की जो आपकी किताब है जो आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ी हुई है वहाँ से, और जो मैंने भी आप लोगों को डिस्कशन की हुई है वहाँ से, और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपने लिमोनिन के लिए जो है वो कौन सा सॉल्वेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट सिलेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वो सॉल्वेंट जो है सिलेक्ट करना है जो आपके कंपोनेंट को लेकर एक मॉडरेट स्पीड के साथ जा सके, जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट है उसको। तो लिमोनिन के लिए और यूजीनॉल के लिए, इन दोनों के लिए आपने मुझे बताना है कि आप कौन सा सॉल्वेंट जो है वो प्रेफर करेंगे और किस रेशो में। अच्छा, एक और इसमें इन्होंने यहाँ पर ये यूवी लैम्प यूवी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है इसमें यूवी लाइट के ज़रिए इसको देख सकते हैं, वो इस तरह से कवर्ड है। हमारे पास जो है वो यूवी लैंप है, ठीक है, उसमें ये इस तरह की कवरिंग नहीं है, तो हम उसको भी इसी तरह कपड़ा डाल के या कपड़ा जो है वो देख सकते हैं। उसकी रोशनी में रखेंगे तो हमें इसी तरह से ये स्पॉट्स जो है ये ग्लो करते हुए नज़र आएंगे, या इनके जो धब्बे से हैं ये आपको कलर फॉर्म में नज़र आते हैं, क्योंकि हमारा जो टीएलसी कार्ड है उसके अंदर फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है ऑलरेडी एडअप है, एडिड होता है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट योर टुडेज प्रैक्टिकल। इसको फिर आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज पे इसकी सारी डिस्कशन लिखनी है और मुझे आपने सॉल्वेंट जो है वो बताना है, फाइंड आउट करके रिसर्च करके कि आपने इन दोनों के लिए कौन सा लेना है और किस रेशो में लेना है। देन आई विल टेल यू कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो नाउ आई स्टॉप माय एंड माय मीटिंग।